Is army safe for girls? You are put to a constant test. Respect is not demanded, it's commanded. And when I became an officer, my father said कि अब मेरी बेटी करेगी. Good morning, viewers. On behalf of Lead Academy, we wish you all a very happy, prosperous, joyful, healthy and a purposeful New Year. आज हमारे साथ हैं कैप्टन आरती मलिक, an accomplished आर्मी ऑफिसर. चलिए सुनते हैं उनसे कुछ कहानियां. वेलकम ऑन बोर्ड कैप्टन आरती. कैसे हैं आप? कैसे हैं? All good, sir. Thank you. Thank you for having me here. A pleasure, आरती. आरती, जब आपने जब फौज ज्वाइन किया था तब लेडीज काफी नहीं होते थे फौज में, है ना? तो Yes. आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि मैं भी आर्मी ज्वाइन कर सकती हूँ? सर देखिए, मोस्टली क्या होता है, हम अपनी मोटिवेशन यूजुअली किसी पर्सन से, किसी इंस्टेंस से, किसी सिचुएशन से ड्रॉ करते हैं. तो डेफिनेटली मेरी लाइफ में भी ऐसे दो लोग अगर मैं कहूँ तो रहे हैं. One of them is my cousin. He was in the army, he commanded and retired. So I was really impressed by his personality. That was one. And when we were in 12th, we had gone for a debate. तो हम एक डिबेट के लिए RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, एक डिबेट के लिए गए थे. वहां पे आई हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग एन आर्मी ऑफिसर. शी वाज अ लेडी ऑफिसर. ओके. तो मेजर भारद्वाज, आई क्लियरली रिमेम्बर. तो हमें उनके साथ रखा गया था बिकॉज RIMC एट दैट टाइम वाज ऑल बॉयज जी. college, so we were not allowed or we were not allotted a hostel. तो हमें उनके साथ रहने को मिला था. So I was really and highly impressed by her personality. So अगर मैं दो लोग कहूँ तो yes, ये दो लोग हैं जिनसे मैं इंस्पायर हुई थी. प्लस मेरी स्कूलिंग है मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राय से, MNSS राय हम बोलते हैं. तो हमारा स्कूल, it motivates you to be adventure loving, and we have so many army officers. So many of our seniors are there in the army, so we have a legacy in school. So that was another incident. So I have these 3 incidents to quote which inspired me to join army. Okay. Now, given the understanding कि आपको जो background है, that you were 7 siblings, you are not those 7 siblings, and the family background and the place from you come from, but it is not a natural choice, ना? तो आपका पेरेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा था कि जब आपने बताया कि मैंने अभी आर्मी ज्वाइन करना है, I want to put on the uniform and serve? Yes, sir. I think when you grow in a small space, तो dreams आपके हो सकता है बड़े हो जाएं, because I went to a school and I started dreaming big. But मेरे पेरेंट्स के सपने थोड़े से छोटे ही थे उस टाइम तक, and their biggest concern was कि is army safe for girls? So their biggest concern more than anything else was my safety. कि बॉर्डर पे जाना है, दूर रहना है, और because the moment you mention army, it's like बॉर्डर पे जाना है. And they were not really, they didn't feel confident that they should send their girl out there all alone. So that was their first reaction, I would say. So were the aspirations, उनका जो ये सोच जो था, was it really valid कि how safe is the army, और मेरी बेटी है तो कैसे रहेगी, अकेले कैसे रहेगी, and how will she be able to cope with the pressures of going through a training and all? तो क्या ये वैलिड लगता है उनको? नहीं सर, देखिए, it was the initial reaction, as I said. Okay. After a point, they became so confident that when it came to taking a final call whether I will stay or I wanted to pursue some other dreams, they were the ones who said कि नहीं छोड़ना है, because by then time they had seen how safe I was, how happy I was, and how much as a person I was growing actually. So they saw that exponential growth in my personality, my character. So they were very happy. They were really happy with who I had become as a result of becoming an army officer, and thereby all the changes in my personality. So yes, उनके जो initial fears थे, they accepted कि हाँ, हम थोड़ा सा शुरू में था, लगा हमें it is not all that great, but eventually they were very happy with my choice. And they were the ones who didn't want me to leave.
Oh, they didn't want you to leave after that. It was a complete transformation actually. But I'm sure it would have taken you a lot of convincing them, given that you have brothers also, and given that अक्सर ये कहा जाता है ना कि ट्रेनिंग जो है कि बहुत फिजिकली बहुत टफ होता है एकेडमी में, एंड इट इज समवेयर डिजाइन फॉर मेन फोक. तो वहां पे एंड अगेन दिस पर्टिकुलर परसेप्शन होता है कि एक बार ऑफिसर बन जाते हो देन यू हैव टू go to officer mess में वहाँ पे where people no officers consume liquor, hard liquor consume. So did you have any of those pressures on while serving and while training? So I'll answer both your questions. One is the related to difficulty in training. So what happens is if as I said, I was in a school which was a sports school. The name itself says sports school. So I was quite fit. I knew horse riding. I was a national level gymnast and I continued to do gymnastics in my college also. So physically training, which was tough, genuinely tough for other lady cadets, was not for me like that, to be honest. Okay. So there are two ways. Either you go and you train yourself and you burn yourself and you become that physically fit, mentally tough person there, or you do all of that as you are growing up. So those are the two options. So those of you, this is a message to the girls. So those of you who aspire to join army, now is the time to start training yourself rather than going out there in the academy, completely untrained and start your training there. Now is the time. Start doing your physical activities, mental toughness, start exercising all that, start making your choices, start living by them. Learn to own your decisions right now. So if you begin now, you will be better prepared to deal with the difficulties, I would say, of the training. So that is one. And second, I think you were asking about liquor part. Right. So having served for 5 years, I have seen 6 CEOs, many dining ins, many dining outs, and so many social gatherings. And I can vouch that I was never even, it was never insisted that I take hard liquor. It was always offered as part of courtesy. Dekhiye, in army, nobody leaves you behind, be it your operation, be it unit, be it the party. Maybe they will never, ever leave you behind. So you're always offered so that you feel part, that, mujhse pucha gaya. But they always value, this is a personal choice. It could be cultural also, and forget culture also. It's a personal choice whether I want to consume something or not. So that was always respected. When I denied, okay, I don't take it, so it was always respected and I was never asked again. But does it change the equation in terms of personal equation jo hota hai, just because you don't consume and then all the other male officers have consume? How safe would you feel there? नहीं सर, इससे इक्वेशन में देखिए कोई भी बदलाव नहीं आता. इक्वेशन इज जस्ट द सेम बिकॉज यू आर नॉट इंटरैक्टिंग. एक उस it's not just the social gathering जहाँ पे एक दूसरे के साथ interact करते हैं. It is your office, it is your training, your morning games, morning PT that you go for, evening games. You are interacting with them like a family. एक परिवार की तरह आप रहते हैं. So this is not the only thing that is going to define whether you are friendly or not friendly. So it never affected my equation with the officers. मेरे fellow officers जो थे उनके साथ मेरी equation में इससे कोई भी बदलाव नहीं आया. That was okay. That's I'm glad to hear that. What about the relationship with the troops? Then do they also see you as a leader, equivalent to that of the male officers? क्या वो जान or how do they see you? How do they perceive you? So देखिए, it's a very famous saying in the army. अगर आप बोलेंगे तो respect is not demanded, it's commanded. ठीक है. So you have to command that respect, and that respect वो जो हम बोलते हैं कि एक इज्जत जो एक ऑफिसर के लिए आती है, वो आई थिंक आर्मी में जो जवान आपको इज्जत देता वो इसलिए नहीं देता कि आप मेल ऑफिसर हैं या फीमेल ऑफिसर हैं, या फीमेल ऑफिसर हैं तो एक तरीके से आपको ट्रीट किया जाना चाहिए. इट कम्स फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ योर कैरेक्टर. आपके कैरेक्टर की जो स्ट्रेंथ है, एंड इट कम्स फ्रॉम योर हेड, मोस्ट ऑफ इट. It is not, to be honest, it is not physical in nature. आप physically fit हैं, of course, that gets you respect again. तो वो देखते हैं अच्छा साहब तो बहुत fit हैं. So that I already had. But
जिससे सबसे ज्यादा इफेक्टिव लीडर आप बनते हैं, दैट इज योर हेड. यू हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग लीडर. एट द सेम टाइम आपको बैलेंस आउट करना चाहिए. देर इज अ ह्यूमन एलिमेंट टू यू ऑल्सो. सो आप किसी के एक्सपीरियंस, अगर आपके यूनिट में कोई जेसीओ है, जवान है, आप उसके एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट करके चलते हैं. जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है, तो आप क्या करते हैं? क्या आप, अगर कोई गड़बड़ हो गई, फॉर एग्जाम्पल कुछ हो गया, तो आप उसमें क्या करते हैं? डू यू स्टैंड अप, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आप पास ऑन कर देते हैं अपने जूनियर पे? सो व्हाट डू यू डू एज अ लीडर व्हेन यू आर पुट इन अ सर्टेन सिचुएशन? And that is irrespective of being a woman officer or a male officer. So that's how it works. Yes, you have to earn it. Can you give any examples? आपने कारगिल में भी serve किया, one of the toughest locations, for anyone to serve, and for all the civilian counterparts here, all those who are watching us, Kargil is very very tough. जो हम लोग जो टीवी में देखते हैं, that's make believe types में होता है, but like it's very tough. So do you have any memories that you want to share with us, how it was for you serving in Kargil? Yes sir, I think that was the most rewarding tenure, I would say. और मैं अपनी बटालियन की फर्स्ट वुमन ऑफिसर थी. मुझसे पहले उस टेरेन में, बिकॉज द टेरेन वाज डिफिकल्ट, उसको एक मुश्किल टेरेन माना जाता था, हार्ड फील्ड पोस्टिंग थी. तो मैं वहाँ की पहली वुमन ऑफिसर थी हमारी यूनिट की. सो माय नेम गोज डाउन इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिट ऑल्सो. तो वहाँ पे एक इंसिडेंट जो मुझे याद है, जब हम शिफ्टिंग कर रहे थे, रिलोकेट करते रहते हैं अपनी यूनिट्स को डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. सो वी वर रिलोकेटिंग. एक एफओएल डेपो था हमारा, उसका रिलोकेशन होना था, तो हम शिफ्टिंग कर रहे थे वहां से. तो एवरीडे कॉन्वॉयज. सो जनरली कॉन्वॉयज जब होते हैं तो एएससी में आपको जूनियर ऑफिसर्स को ही ड्यूटी मिलती है उसकी, बिकॉज सीनियर ऑफिसर्स आर डीलिंग विद अदर थिंग्स इन द यूनिट. तो एक इंसिडेंट मुझे याद है कि वेयर आई फील दैट एज अ लीडर यू हैव टू टेक डिसीजंस then and there. You cannot waste time and you cannot look weak also. So आपको ops में तो of course in operations you always get those situations, but I'm talking about services, army service corps it is. So it is more like supporting. So there also you come across those incidents. So what had happened is हम shifting कर रहे थे, convoy आ रहा था, and suddenly उस दिन बर्फ गिरने लग गई. तो जब बर्फ गिरने लग जाती है तो सडनली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द व्हीकल्स टू ऑपरेट, बिकॉज सॉफ्ट थी उस टाइम, स्लिपरी हो जाता है. तो हम कॉन्वॉय में चल रहे हैं और मेरे सामने वाली गाड़ी, ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, एक्सपीरियंस ड्राइवर, डाउन स्लोप पे हम थे, सडनली ब्रेक लगाया. बहुत नैरो रोड होते थे उस टाइम में, आई एम टॉकिंग अबाउट 2004-05. तो उस टाइम रोड्स भी नैरो थे, एंड सडनली द व्हीकल टर्न्स ऑन स्नो. ठीक है, घूमने लग जाती है गाड़ी. It slips down, है ना? Yes, बिल्कुल. So एक ALS जो आपके सामने चल रही है, एंड सडनली ड्राइवर ने ब्रेक लगाए और धीरे धीरे करके वो 180 डिग्री टर्न लेके, एंड आई एम लुकिंग एट द ड्राइवर राइट अहेड, एंड आई एम लाइक ये क्या हुआ, एंड लुकिंग एट इट. तो ठीक है, ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी. देन द एंटायर कॉन्वॉय हैड टू हॉल्ट. रुक गए हम लोग. तो बोलते हैं साहब क्या करें. So that is the time they have the skill, but decision making is the officer's choice. Or first year of my service, or I said okay ठीक है, ये घूम गई, वापस तो घुमानी पड़ेगी. I asked them कि आप में से कौन confident है. तो they said हाँ साहब कर लेंगे साहब, हो जाएगा. तो ऐसा ठीक है करो. But I only told them one thing at that time, कि डर तो मुझे भी लग रहा था, बट यू कैन नॉट शो योर फियर एट दैट मोमेंट, राइट? तो आई टोल्ड देम जस्ट वन इंस्ट्रक्शन कि बंदा नीचे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज खाई भी थी साइड में. तो आई सेड द मोमेंट यू फील द व्हीकल इज गोइंग आउट ऑफ योर कंट्रोल, आप गाड़ी से नीचे. नहीं साहब ऐसे कैसे? आई सेड नहीं, माई ओनली प्रायोरिटी इज कि आप में से किसी को चोट नहीं लगेगी, गाड़ी का देख लेंगे. देख लेंगे क्या सर, आपको पता है फिर क्या होता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैपन.
But I had to give them that confidence as a young officer, first year in service, that no matter what, I will stand by you. So Incredible. it is going to be my responsibility. And I realized that after that incident, that was one incident that actually changed the perception of Jawans, Meri unit mein. They started looking at me as an officer who will stand by them. True. When it comes to taking the decision, taking responsibility, कि ये सब जिम्मेदारी लेते हैं तो लेंगे ये. So after that, that was one incident, if I have to quote, that helped me gain that respect in that particular unit. Of course, अगली unit, अगली शुरुआत, you start with a blank slate. तो इस तरीके से चलती हैं. तो ये कहानियां हैं जिनसे हमें लगता है, बट उस समय उन्होंने मुझे ये नहीं देखा कि ये जेंटलमैन ऑफिसर हैं, लेडी ऑफिसर हैं, क्योंकि so they look at you with that eye कि ये ऑफिसर हैं और ये कैसे अफसर हैं. That's it. Incredible decision, Aarti. I must compliment you there. And that is where, when you speak of a convoy, the convoy is about 400, 500 vehicles. That was not that. Yes, that was a shorter, sir. But about 50 vehicles in that 50 vehicles in that terrain. 50. And you placing the life of a Jawan, the most must have given them so much of confidence, behind the officer. Yes. The captain, and we were doing what? उस time आप क्या 22, 23 के थे कुछ? Yes, absolutely, sir. Just commissioned. Just commissioned, and you take a decision of that nature. That nature, absolutely. That's what army teaches, that's where the training comes in. So you are trained to be that person. So it is not that you cannot be, you have to be mentally strong to take those decisions, and that वो हमें training में सिखाया जाता है. So incredible. And Aarti, what about equality? I mean, this is again काफी debate किया जाता है in terms of male and the lady and the gentleman officers. How do you feel that? How is equality? उसका आपका क्या राय है? आर्मी में क्या होता है? Well, sir, even before reaching the question about army, I think I would want to, pose a counter question. अब मैं आपको सवाल पूछती हूँ इसके पर. तो आपको बराबरी देखने को कहाँ मिलती है? Do you see in the nation normally आपको देश में देखने को मिलती है बराबरी? पार्लियामेंट में मिलती है, बॉलीवुड में मिलती है, हॉलीवुड में मिलती है, कहाँ आप कहाँ देख पाते हैं इक्वालिटी? I think not restraining to India per se. I think the world over it's more of patriarchal society. Absolutely. That is my understanding. Maybe at a small level, at a smaller level, family may we speak of, and husband and wife are equals, the kids are equals, boy and girl are equals. But more or less, it's more of still a patriarchal society. Probably Absolutely. India is among the very few nations that we have a president who is a lady. The first citizen of the country is a lady, and we've had lady as prime ministers and chief ministers. But so that is where it stands. That's what I feel. Yes. I just want to know आपका view क्या है? Absolutely. So you put it there, sir. Yes. So the entry, हमारे viewers को पता होगा, I'm sure that it started in early 90s, 1992 से WSCS जो Short Service Commission women officers की entry थी, वो 92 से start हुई थी. So we are still in a very nascent stage. मैं कहूंगी कि काफी नई एडजस्टमेंट है इंडियन आर्मी के लिए. आई वुड कॉल इट एडजस्टमेंट बिकॉज 92 से पहले एज ऑफिसर्स हमारी एंट्री नहीं थी. सो इट वाज एंटायरली डोमिनेटेड बाय मेल डोमिनेंट, आप कह सकते हैं. इट इज स्टिल दैट वे. सो 92 में एंट्री हुई, बट इफ यू लुक एट दो स्मॉल स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन वेरी रिसेंटली, व्हाट हैपेंड, इनिशियली परमानेंट कमीशन नहीं था. Now we have permanent commission. NDA was never open for females. Now it has been opened, of course, with a very small number. 19 is the number, I think, of this first batch, but it has been opened. Then talk about Air Force, Navy, also fighter pilots. It has been opened to a very few restricted, the number is restricted for now, but हमारी entry भी नहीं है, right, sir? And you talk about army nursing officers. It is open only for females. Civil में आप देखेंगे male nurses बहुत ज़्यादा हैं,
आर्मी में it has been exclusively for female, so we have to look at all the sides there, right? So अगर उस सब को देखें, and the most recent is approval now for promotions also. So women officers have been, that's a historical decision. उसमें भी ये है कि हमें वहां पे भी इक्वालिटी पे प्लेस कर दिया गया है. वी डोंट नो हाउ द नंबर्स विल लुक लाइक, लेट्स सी नंबर्स क्या रहेंगे, कैसे प्रोग्रेस होगी. बिकॉज देखिए अब तक फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी सेम नहीं थे, ठीक है. अगर वहां इक्वालिटी नहीं थी तो इक्वालिटी बहुत सारी चीजों में और भी कुछ स्टैंडर्ड्स थे जो थोड़े से रिलैक्स थे. एंड हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, the face of war is changing. It's becoming more, it's not all that physical in nature now. So as the requirement of the forces is changing, मुझे लगता है उस तरीके से और इक्वालिटी आती चली जाएगी. शुरुआत हमने जहां से की थी, अगर हम वहां 92 को लेके चलें और अब देखें कि 2022-23 नाउ, तो हम कहाँ खड़े हैं. We are definitely moving towards equality. Equality per se है या नहीं है, I think I have to be candid and I have to say कि नहीं है, but उसकी तरफ हम अग्रसर जरूर हैं, ठीक है, सही दिशा में चल रहे हैं. So that is a positive point there. Very well brought out, Aarti. So it's a two-way journey, na? Wherein one side we have the male folk, the men folk also to ensure that we give the best to our ladies. We enable them because, as you said, the journey, the battle force is not going to be the same. The war front will not be the same. And then women come with a lot of pluses. And they are strength. They come with a lot of pluses. अब मेरे को ये बताओ, आप you are a silver medalist from the OTA. Sir. And how much did that kind of a thing help you out while serving days? You also you also won the firing competition also. Does that all help you in garnering the respect of your troops and the officers around you, or they also see that यार ये तो मेरी competition है? How does it work? It works both ways actually, sir, but mostly in a positive way. So you have done well in the academy, so your unit starts taking pride in you. तो आप यूनिट का प्राइड बन जाते हैं कि अच्छा हमारी ऑफिसर, शी वाज सेकंड इन द एकेडमी, सो शी वाज वन ऑफ द मेरिटोरियस ऑफिसर्स देयर. तो दैट डेफिनेटली बिकम्स आपके लिए एक पॉइंट, बट इट सेट्स अ बेंचमार्क फॉर यू कि अगर आप सिल्वर मेडल लेके आए हैं एकेडमी में, देन देयर इज एक्सपेक्टेशन, योर परफॉर्मेंस ब्रिंग्स मोर, इट विल ब्रिंग मोर एक्सपेक्टेशन. सो वो भी होता है. सो यस, इट हेल्प्ड मी, क्योंकि यूनिट में देखिए पता सबको चल जाता है जब आपकी पोस्टिंग होती है, अच्छा क्या है, जस्ट बाय योर नंबर दैट यू गेट इन द कोर्स. सो नंबर से ही पता चल जाता है क्योंकि मेरिट में कहाँ स्टैंड कर रही थी ये ऑफिसर. सो उससे क्या होता है, इट गिव्स दैट परसेप्शन कि हाँ ओके, सो वन ऑफ द बेटर ऑफ कैडेट्स, एक्चुअली वन ऑफ द बेटर कैडेट्स फ्रॉम दिस कोर्स. बट आई थिंक वर्किंग जो हमारी यूनिट में होती है और जो ट्रेनिंग में होती है, दे वेरी डिफरेंट. तो इट गिव्स यू इनिशियल प्लेटफॉर्म. Nonetheless, you are put to a constant test within every unit. So what you bring, it helps you set that वो initial impression जो कहते हैं ना, first impression. So first impression is never the last impression. It's a lasting impression. आप शुरू करते हैं, but then you have to build your reputation. True. So that it happens like that. The other incident जो आपने बताया कि firing का, that definitely it happened in my second unit. तो सेकेंड यूनिट में जब आप compete करते हैं जेंटलमैन ऑफिसर्स के साथ किसी कंपटीशन में, एंड देन यू स्टैंड आउट देयर, अगर आप वहां जीतते हैं तो देन इट डेफिनेटली गेट्स यू दैट रिस्पेक्ट दैट यस, ये हर एस्पेक्ट में इक्वल हैं या इक्वल से भी बेहतर हैं. सो दैट डेफिनेटली वो आपके लिए एक रिस्पेक्ट आप कमांड करते हो उसमें, बिकॉज आपने परफॉर्म किया है, आपने इक्वल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म किया है, आपने दूसरों से बेहतर किया है. दैट डेफिनेटली गेट्स यू दैट रिस्पेक्ट यूनिट, क्योंकि वो आपकी यूनिट की ही परफॉर्मेंस है. व्हाइल यू आर सर्विंग इन द यूनिट, आप जवानों के साथ ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उस कंपटीशन की तैयारी भी आप जवानों के साथ कर रहे होते हैं. तो जब उस कंपटीशन में आप अपने ही जवानों से भी बेहतर करते हैं,
ठीक है सर, फायरिंग में जवान एक्चुअली अच्छे होते हैं, हमारे बहुत अच्छे होते हैं। तो जब आप कंपटीशन में, दैट गिव्स अ होलिस्टिक पिक्चर कि ये जो ऑफिसर हैं, ये अपना नर्व्स पे भी कंट्रोल है, कैन कंट्रोल दी हेड एंड कैन गेट यू थ्रू, और ये कंपटीशन जीत सकते हैं। True. That must be very satisfying, कि you went through the rigor, कि इतना जो exactly जो जवानों के साथ होता है बिल्कुल ऑफिसर के साथ भी उतना ही होता है, and then being having an edge in firing finally and getting that winning the competition. I am compliments to you, Aarti. And, I think one thing I feel there is मुझ पे expectations का pressure नहीं था सर. Okay. So probably they didn't expect me to win. They're like, okay, ठीक है, साहब अच्छा कर ले बस. So there was no pressure on me, to be very honest. किसी ने मुझे ये नहीं कहा था आपको competition में जीतना है या क्या है. I was there to enjoy the competition. I was selected. Okay, you have to. And another thing, you are never asked actually. फौज में ये it's a beautiful thing. You are not asked कि आप competition में participate करना चाहते हैं या नहीं. Competition आया, detail किया, Captain Aarti Malik, lead the troops, and then there is no going back. I think that is where the definition it is, right? That you're an officer there. Yes. And you expect to do it. You're trained for it. You're trained to lead. You're trained to take decisions. So I think that is it. Any lonely moments that you had while serving? And because like mostly male dominated, how many lady officers you had in your unit? Never more than 2, sir. Never more than 2. We've always been 2. So the first posting, जो पहली posting थी, वो मैंने जहाँ आपको बताया कि कारगिल में थी. We were 2 officers. The other officer वो भी मेरी ghostmate ही थी. Then कभी आप लोगों को टेम्पररी ड्यूटी बोलेंगे उसको. सो आपको 3 महीने 6 महीने कहीं भेज दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स. सो बीइंग जूनियर ऑफिसर्स, अगेन टेम्पररी ड्यूटी, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न आल्सो. तो सीखने की भी एक अपॉर्चुनिटी होती है. तो इनवेरिएबली जूनियर ऑफिसर्स जब हम होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, तो हम में से किसी का नंबर आता है टेम्पररी ड्यूटीज में. सो ज्यादातर हम दोनों में से एक यूनिट में रहती थी, एक मोस्टली बाहर रहती थी. सो most of my tenure, for most of my tenure, हम में से एक बाहर रहती थी और एक ही यूनिट में रहती थी. So that leaves you with the sole lady officer there. तो वहां पे ladies भी नहीं आती थी. When I say ladies, it means officers wives actually. Right. So because field hard field था, so बच्चों के साथ वो लोग भी आना पसंद नहीं करते थे, तो नहीं आते थे. But lonely per se, I think everybody feels lonely there. Okay. There comes a moment जहाँ सबको loneliness feel तो होती है, but it is not for the reason कि आप lady हैं. अगर आप उसको मुझसे पूछेंगे कि did you feel that you are the only lady in the battalion? No, वो मुझे नहीं feel हुआ. Okay. Because you are treated like a family member. You are looked after like a family member. और आपको अलग से एक लेडी की तरह ट्रीट ही नहीं किया जाता. यू आर जस्ट just another officer in the unit, I would call. But having said that, there are times when your privacy is required to be respected. That is respected. आप कहीं बाहर जाते हैं जहाँ पे आपको टेंट्स में रहना पड़ता है, वहाँ your comfort is taken care of. तो आप कभी ऐसे सिचुएशन में जाते हैं जहाँ पे yes, there are a few restrictions जहाँ पे आपको you have to be treated like a lady for the sole reason of giving you your privacy. So that is given. Apart from that, you are included. It is never that आप अलग खड़े हैं और gentlemen officers अलग खड़े हैं या troops आपसे distance maintain करना चाह रहे हैं. It is never like that. So it's a beautiful combination of treating you just a bit like lady, and the rest of it is like an officer. Okay. So it's a beautiful balance that is. Probably that's why it's called. It's always a family affair there. We stand with one another through thick and thin. Absolutely. And how was your parents and how was your आपके जो siblings हैं उनका कैसे था when you met them for the first time as an officer with 2 stars on his shoulders? So can you just explain how they felt or what did it? I'm sure they would have been jumping in joy. Yes, I think see apart from the pride, एक मैं
इंसिडेंट जो कमीशनिंग के बाद मेरे पेरेंट्स आए थे कमीशनिंग के लिए और हम घर पहुंचे, तो ट्रेनिंग में क्या उस टाइम में वी डिड नॉट हैव स्मार्टफोन्स नहीं थे, तो आप अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो शेयर नहीं कर पाते हैं एक्चुअली, इन पिक्चर आप शेयर नहीं कर पाते हैं। तो ट्रेनिंग में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो फिगर ऑफ 8 करके होता है, 2 चोटी आप बनाएंगे और पीछे फिगर ऑफ 8 में बाल बांध लेंगे, आइदर यू डू दैट या फिर आपके बाल छोटे कर दिए जाते हैं। सो आई डिड नॉट नो। मैं एक चोटी भी अपनी फ्रेंड से बनवाती थी कॉलेज में भी जब मैं बनाती थी, तो वो मेरे आई वुड से कि वो मुझसे हो ही नहीं सकता था ट्रेनिंग के साथ। एंड मैं उन लोगों में से नहीं थी जो बहुत पोजेसिव हूँ अपने बालों को लेके, तो मैंने अपना हेयर कट ले लिया था। सो आई हैड वेरी शॉर्ट हेयर, आई हैड नॉट लॉस्ट मच वेट, बट ट्रेनिंग के बाद क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाता है। बिल्कुल, तो खासकर ओटीएस अगर आते हो तो चेन्नई की गर्मी है जी, चेन्नई की गर्मी, हॉट एंड ह्यूमिड, और फिर उसके बाद आप रफ एंड टफ, यू बिकम अ बिट मस्कुलर आल्सो आफ्टर गोइंग थ्रू दैट एंटायर ट्रेनिंग। एंड मैं जीन्स पहनना पसंद करती थी, तो जब मैं अपने घर में गई मम्मी पापा के साथ, मम्मी पापा आगे चल रहे हैं तो थोड़ा सा पीछे चल रही हूँ, तो आई स्टिल रिमेम्बर कि उस दिन मेरी सिस्टर ने क्या कहा था। शी सेड जिसे लेने गए थे वो कहाँ है। So basically, my sister did not recognize me. She refused to recognize me. Okay. So that was one incident. Then when I started speaking, she's like, oh, okay. And the question was, तू वापस वैसी हो जाएगी ना जैसी थी, okay. So will you become the same person that you were? So that was one incident. And second, I think after that we had gone for shopping. तो उसके बाद आपकी क्या आदत हो जाती है, यू स्टार्ट वॉकिंग सो फास्ट अकेडमी में, यू हैव टू रीच एवरीवेयर, उसी टाइम पहुंचना है। Would you also swing your hands, left, right, and walk in the civil streets? That used to happen when you're working with ghostmates and you without realizing. Yeah, by correct. Yes. By default हो जाता है, you start synchronizing your feet also, कदम मिल जाते हैं, कदम मिलते हैं, because that's how it works, no? आप यूनिट में भी चल रहे हैं तो okay, again protocol, CO will walk in the center, the next senior officer to his right, then the next to his left, so we have to follow all of that. तो वो चलता था यूनिट में। बट आई रिमेम्बर ये मार्केट वाला इंसिडेंट, सो हम चल रहे हैं एंड वो पेस तो बढ़ गई थी कदमों की ट्रेनिंग के बाद। Then my sister literally grabbed me, पीछे से पकड़ा, बोली ट्रेनिंग तू करके आई है, मैं नहीं कर। okay. Slow down, I have not done this training. So ये कुछ changes थे जो they were like, okay, you are another person. But of course, having said that, they were very, very proud of me. They're very proud. And then आप क्या होता है family में, you set a benchmark there. True. So this achievement of mine, it did set a benchmark, and I was not the eldest, but मैं सबसे पहले settle हुई थी. When you say settle, I had become, I was the first one amongst my siblings to get a job, and a job at that level, something that everybody was proud of. मैं अपने गांव से भी पहली ऑफिसर थी, अभी तक भी I think मैं अपने गांव की अकेली ऑफिसर हूँ सर. So that is one thing we would like to change. But yes, very proud moment for my parents, my family, and everybody started looking at the family differently. आज भी जब गांव में, because वहां से आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, and your siblings also get motivated that yes, things are achievable. So जब कोई आपकी फैमिली में से अचीव करता है कुछ, then you feel कि okay, this is doable, कर सकते हैं. And from there, everybody started working. We were on right track. But all of us achieved our dreams and doing well. अभी एक ऐसी स्टेज है कि हमारे गांव में हमारी फैमिली का एग्जाम्पल दिया जाता है. Oh, it must be a very super proud moment for everyone. Absolutely. मैं ये नहीं कहूँगी we are extraordinary and we have achieved everything that possibly anybody can, but we have done reasonably well as a family. I think you set a lot of benchmark. I think leading at the age of 22 itself is an achievement. Not many get to do that. Absolutely. And that too leading in the most toughest condition one can ever imagine. I remember one of those, proud moments that parents have. In those days, self-attestation was not a thing. So you could not attest your documents. Correct. So, but being a class 1 gazetted officer, I had that authority. So before that, my father was an NCC officer. So people used to come to him, document attest karane ke liye apne. And when I became an officer,
my father said कि अब मेरी बेटी करेगी. मेरी बेटी करेगी. So that was the moment. I remember जब भी मैं घर जाती थी तो he used to insist that I bring my stamps. Stamps, and okay. Yes, that was one of those. He took pride in that. He really took pride in that she is going to do it for me. Correct. I think that's where the definition all changes. Rather than telling कि वो मेरी बेटी है, मैं उनका अभी बाप हूँ, kind of thing. That she's now. Any advice you want to give to all the aspirants? Now that the ND is also open for the girls, and as you said, the journey for an equal opportunity is actually begun, and it will only go on to scale. So any advice, any suggestions that you want to give for all the aspirants and all those people who are watching us? So all the aspirants, and I would not limit this, sir. मैं ये सिर्फ लड़कियों के लिए limit नहीं करूँगी. Because we are talking about equality, so it's an equal opportunity. So आप लोगों में से जो भी aspirants हैं, आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, I can say one thing कि इससे noble profession हमारे देश में नहीं है. It's a job, okay? Job की सारी perks आपको मिलती हैं, आपको salary मिलेगी, privilege मिलेगी, नाम मिलेगा, fame मिलेगा, but एक satisfaction जो इस job में मिलती है, that you're serving your nation. And एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी जो आपको इस जॉब में मिलेगी, वो आई थिंक कहीं और नहीं मिल सकती. सो इट फोर्सेस यू टू स्टे फिट. ठीक है, द नेचर ऑफ द जॉब इज लाइक दैट. इट इंश्योर्स दैट योर लाइफ इज फुल ऑफ एडवेंचर्स. यू विल हैव सो मेनी स्टोरीज. आपके पास इतनी कहानियां होंगी जिंदगी की, इतनी एडवेंचरस, इतनी ब्यूटिफुल मोमेंट्स होंगी आपके पास लाइफ की. Apart from all the opportunities that you get in the rest of the jobs, ये जिंदगी, as they say, army is a way of life. True. So ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा. So it is a profession that is completely filled with, job satisfaction, I would say. The pride of serving your nation, along with that transformation in character, your personality. So yes, go for it and start preparing today. No matter you're in grade 4, 5, 6, फर्क नहीं पड़ता है. Start now. Because earlier they used to say, of course it is true, it's never too late to start. But the new normal is it's never too early to start. So wherever you are, just start preparing. And it's a wonderful profession. I wish you all the very best. Those of you who aspire to be army officers, have a wonderful life. Thanks a lot for this important, valuable, and a very inspiring message to all the aspirants, and for the matter for general public also. This is one profession that you can actually see for yourself how much of difference, how much of character it builds. Absolutely, sir. Absolutely. And it's a life-altering kind of a profession that you can never think of. There's an element of service. There's an element of leading at a young age. It's an element of your ability to take decisions, not just for yourself, but decisions that can impact the nation. Very few professions can offer this. Yes, I agree with you. No other profession does that. They won't place, people's lives at stake, your decision. And it's not just the profession. People will not trust you with their lives. Absolutely. बाहर job में नहीं करते हैं, but in army, men that you command, they trust you with their life. That I think इससे ज़्यादा तो कोई आपको trust नहीं कर सकता ना, sir. So Absolutely. you get that in this profession. And this is real time. Real time. Where the danger is imminent on your face. Absolutely. And such decision making, that rapid decision making, and leading from the front, इसी को कहते हैं. And the charm of wearing the uniform of your shoulders, up your sleeves, and then the pride that stays with you, and the discipline that stays with you. Absolutely. All through your life, that's immortal. Thanks a lot for this insights, Captain Aarti, and we will meet you in the next episode. And to all the viewers, subscribe, click the review button, and the bell icon, and stay tuned to us. Jai Hind. Thanks a lot, Aarti. Thank you. Thank you.